Hello everyone, let's start with the important 25 questions for paper 1 part A, general questions, general knowledge questions. So our first question is who was the first woman prime minister of India? We all know that Indira Gandhi was the first woman as a prime minister of India, so our answer should be A. Moving on to the next question, which is the largest river in India by volume? If you say, like, if they ask you about the largest river of India, then the answer is B, Ganga. But here it is asking about the लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बताना कि रिवर का साइज क्या है इंडिया में, तो आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? लुक, इंडिपेंडेंस हुआ था इन 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त 1947. बट रिपब्लिक कब हुआ था? दैट्स द डे वी सेलिब्रेटेड इंडिया एज अ रिपब्लिक डे इन 26 जनवरी 1950. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 26 जनवरी 1950. Okay, moving to the next question, who invented the telephone? As we all know, the answer is Alexander Graham Bell. अच्छा, ये भी हमें पता है कि Thomas Edison has invented the, we can say, bulb. Michael Faraday is known for the discovery of electricity, right? Now, moving to the next question, that is, which country is known as the land of rising sun? The answer is Japan. Why? Because if you see the map of the earth, you can see in the Pacific Ocean, you see the first country that pop up, that is Japan. So we know the earth rotates from west to east. Okay, so first country that will show should be Japan. So answer is Japan. Okay, because China जापान से थोड़ा सा वेस्ट साइड है, कोरिया जो है वो जापान के इस साइड में बोल सकते हो, तो पहले जो आपको मिलेगा वो जापान मिलेगा. करेक्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? एज वी ऑल नो, द आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर. What Bankim Chandra Chattopadhyay wrote? He wrote Vande Mataram, right? So you should know that on the question that asking about the national anthem of India, the answer is Rabindranath Tagore. Okay, moving to the next question, which is the highest civilian award in India? As we all know, the answer is भारत रत्न. भारत, ऐसे देखा जाए तो टोटल 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं, जिसमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो भारत रत्न, नेक्स्ट इज पद्म भूषण, नेक्स्ट इज पद्म विभूषण एंड नेक्स्ट इज पद्म श्री. So you all know, first is Bharat Ratna, second is Padma Bhushan, third is Padma Vibhushan, and next Padma Shri. So here the highest, means the top order civilian award is Bharat Ratna. Okay, next, moving to the next question, that is, who discovered the law of gravity? As we all know, Newton discovered the law of gravity. That is, what is the law? The gravity is nothing but the force divided by mass. Okay, moving to the next question. Next question is, which city is called the Pink City? So as we all know, the Pink City is also known as the Jaipur, right? Next, how many players are there in hockey team? Remember, इंडिया की क्रिकेट टीम में जितने प्लेयर होते हैं ना, 11, सेम एज इट इज हॉकी के टीम में भी प्लेयर होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? ओके, वीनस, और एक और नाम होता है, इट इज़ अ सिस्टर, अर्थ सिस्टर. अर्थ की सिस्टर को भी बोला जाता है वीनस. ओके, सो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं बिकॉज इट ऑलवेज स्टार आपको ग्लो करता हुआ नजर आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? जस्ट लुक एट द ऑप्शन, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा. यू नो Sydney, Melbourne, these are the, we all knew these places by the stadium, right? Cricket stadiums हैं इनके, इन यहाँ पर सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में. So you got confused. The real answer will be Canberra. Okay, so how could you remember this? How could you remember A for Australia, C for Canberra? Moving to the next question, that is, which gas do green plants absorb during photosynthesis? Okay, the photosynthesis process by which plants produce their own food. Okay, so we all know the process is when the carbon dioxide and water mixed up with in the presence of sunlight and the green color pigment that is known as chlorophyll, they form C6H12O6, right? This is nothing but the glucose plus oxygen. So what it is asking? It is asking, in the process of photosynthesis, green plants absorb, which gas plant absorb? The plant absorb carbon dioxide. If asked which gas released, the answer is oxygen. Correct. Moving to the next question, who was the first president of independent India? Who was the first president of independent India? Dr. Rajendra Prasad. Also, one of the question is, he was also the chairman. He was the chairman. He chaired a chairman of first constituent assembly. He chaired the constituent assembly, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उसी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन या हेड कौन थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, उस कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर बिल्ड द ताजमहल? ऑफ कोर्स शाहजहां. ओके, एक क्वेश्चन आया था, हुमायूं एज सच, अकबर एंड औरंगजेब. शाहजहां ने एक और चीज़ बनाई है, दैट इज रेड फोर्ट. Red Fort is also built by Humayun, and for Shah Jahan he also built
Taj Mahal. Okay. Moving to the next question, who is called the Iron Man of India? Of course, Sardar Vallabhbhai Patel. Why he called the Iron Man of India? Because he stood up as a iron body. Like iron is very strong, so he comparatively strong for our country. क्यों? क्योंकि इन्होंने during when India is got its independence, India के 565 plus part में divide था India. So he consolidated all the part and converted into a वन नेशन दैट इज़ इंडिया. इन्होंने 565 को कन्वर्ट करके एक नेशन में चेंज किया था. दैट्स वाई इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया. और इनकी जो मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, राइट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पे बनी है? ये बनी है आपकी सरदार सरोवर डैम में. सरदार सरोवर डैम पे बनी है. Got it? So this is the question. Next, moving to the next question. Which Indian scientist won the Nobel Prize in 1930? Of course, C.V. रमन. किस डिस्कवरी में इनको मिला था? रमन इफेक्ट में. किसमें? रमन इफेक्ट में. एक्चुअली ये इफेक्ट क्या था? ये बताता था कि जो ओशन का कलर जो है, समुद्र का जो कलर है, ओशन कलर ब्लू क्यों होता है. ओके, तो ये रमन इफेक्ट की वजह से होता है. स्काई ब्लू क्यों दिखता है? एक्चुअली क्वेश्चन वॉज स्काई ब्लू क्यों दिखता है. तो उन्होंने बताया था कि ऑल द एज वी नो द लाइट कंटेन्स 7 कलर्स. सो ऑल कलर्स रेडिएट हो जाती हैं. ओनली ब्लू इज एब्जॉर्ब बाय द आवर एटमॉस्फेयर. इसीलिए हमको कलर कौन सा दिखता है? Blue. Okay, this was Raman effect. Moving to the next question, where is the headquarters of ISRO? This is important question. The answer is Bengaluru, not Mumbai, not Hyderabad, nothing else. The answer is Bengaluru. Direct answer question है, direct पूछ सकता है कि ISRO का headquarter कहाँ पे है. So you should remember this. The next question is, which state in India has the highest literacy rate of recent data? The answer is Kerala. Approx more than 91% केरला का जो literacy rate है, that is important. So you should remember this. Okay, moving to the next question, which organ purifies the blood in the human body? The answer is of course kidney. Kidney also filtered the फिल्टर करता है ब्लड को और वाटर को फिल्टर करता है किडनी. ओके, नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942? ऑफ कोर्स क्विट इंडिया मूवमेंट. आंसर इज ओके, फर्स्ट थिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921. ओके, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. सिविल डिसोबीडियंस 1931 में हुआ था. स्वदेशी मूवमेंट इट इज़ आई थिंक 1914 या 1915 की समथिंग हुआ था. सो दीज 3 वर लॉन्च बाय अबर बाबू, महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था. एंड रेस्ट ऑफ दिस इज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी जी. नेक्स्ट मूवमेंट टू विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? द आंसर इज गुजरात. ओके, so this whole part is Gujarat coastline. So answer is Gujarat coastline. So next question is, what is the full form of CPU? The full form of CPU is central processing, and this is the easy question. You can attempt this question. Okay, so rest of the question we will do in our next video. So for that, just like and comment and wait for the next video that is more important, because we are doing all the important questions, previous year questions for B.Ed entrance exam. So thank you and have a wonderful day.